Good morning, students. This is our GK class. Today we will start a new worksheet of Amazing India. Open page number 10. Dams in India. Dams in India. India is one of the world's most productive dam builder for purposes such as generating electricity, flood control and irrigation. इंडिया जो है वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट प्रोडक्टिव डैम बिल्डर कंट्री मानी जाती है फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड कंट्रोल एंड इरीगेशन. On which rivers have these dams been built? जहाँ जहाँ पे ये रिवर्स के डैम्स बने हैं उनके बारे में बताना है. ऑल्सो मैंशन दी स्टेट्स and we have to write the name of the states. Take help from the help box. The help box is given and the answers we can take from there also. First number, Bhaskara Nangal Dam is the world's second highest straight gravity dam. भाखरा नंगल डैम जो है वो वर्ल्ड्स का सेकेंड हाईएस्ट स्ट्रेट ग्रेविटी डैम माना जाता है. इट टुक 15 years टू कंस्ट्रक्ट एंड वॉज completed in 1963. इसने कितने साल लगे थे इसे बनने में? 15 years लग गए थे. और ये कब कंप्लीट हुआ था? इट वॉज completed in 1963. इट्स रिजर्वॉयर गोविंद सागर इज़ 90 किलोमीटर लॉन्ग. इसका जो रिजर्वॉयर है और गोविंद सागर है वो कितना लंबा है? 90 किलोमीटर्स. वॉट इज़ द नेम ऑफ द रिवर एंड स्टेट? रिवर इज सतलेज. You can see option number second, Satluj, and its state is Himachal Pradesh. Option number B, Himachal Pradesh. Next, second, with a height of 261 meter, Tehri Dam is the tallest dam in India and one of the tallest in the world. Tehri डैम जो है वो टॉलेस्ट डैम इन इंडिया और वर्ल्ड का माना जाता है विद अ हाइट ऑफ 261 किलोमीटर्स. Name the river and the state. What is the name of the river? River is Bhagirathi. River name is Bhagirathi. Option number 3. And state name is Uttarakhand. Option number B. Right hand side. You can see Uttarakhand. That is the correct answer of the state. Third is Hirakud Dam is one of the first dam in the country whose construction started after India's independence. Which is the dam which was started after the independence of India is named Hirakud Dam. You all know that the name of that dam is Hirakud Dam. It is one of the longest dam in the world with a length of 26 किलोमीटर. ये वर्ल्ड का longest dam माना जाता है with a length of 26 किलोमीटर. Write the name of the river and the state. Name of the river was Mahanadi. Option number 4th in your left side help box you can say option number 4th Mahanadi, and state is Odisha. Option number A in your right side in the help box you can see A, Odisha is the correct answer. You all have to write the answers in your book. Fourth is Nagarjuna Sagar Dam is the world's largest masonry dam. Many ancient Indian monuments were dug up and relocated for its construction. बहुत सारे एशियन मॉन्यूमेंट्स को इसमें यूज़ किया गया था इसके कंस्ट्रक्शन के लिए और उनको शिफ्ट किया गया था इसके कंस्ट्रक्शन के लिए. राइट द नेम ऑफ द रिवर एंड द स्टेट. द नेम ऑफ द रिवर वॉज कृष्णा. इन योर लेफ्ट साइड ऑफ द हेल्प बॉक्स फर्स्ट ऑप्शन कृष्णा इज द करेक्ट and state name is Telangana. Option number D in the right hand side. You can see option number D in the right hand side. Telangana is the correct answer. Now see below. Seek out. Find out the name of the world's second largest concrete gravity dam in Gujarat. हमें क्या बताना है? वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कंक्रीट डैम बताना है जो ग्रेविटी के फोर्सेस से बना है गुजरात में. Which was it? सरदार सरोवर डैम. SARDAR सरदार सरोवर. SAROVER सरोवर डैम. DAM डैम. सरदार सरोवर डैम is the correct answer. You all have to write the answer. Okay. Next, open page number 11. Change the page to page number 11. Where in India? इंडिया में कहाँ लोकेटेड है ये चीज़ें? Solve the crossword puzzle. हमें puzzle solve करनी है across and down. The puzzle is given to us across and down. We have to solve this puzzle by answering the questions. First we will see the downside. First question, the Kamakya temple is located on the Nilachal hill near this state.
कौन सी स्टेट के पास कामाख्या टेम्पल लोकेटेड है? नीलाचल हिल्स पे. यू कैन राइट द आंसर गुवाहाटी. GUWAHATI Guwahati. You can write the answers in the boxes given below. You all see the boxes given below in front of the in between the pictures. You have to write the answer number first, Guwahati. Write the answer GUWAHATI Guwahati. Next is you all have to see across side. Second number, the Bandra Worli Sea link can be found in this city. The Bandra Worli Sea link can be found in this city. कौन सी सिटी में हमें बांद्रा वॉली सी का लिंक मिलता है? The answer is, you all have to write the answer, Mumbai. MUMBAI Mumbai. Okay. Now third question, the Shalimar Bagh made famous by the couplet, if there is a paradise on earth, it is here, it is here, it is here, is located on a lake side in this city. इसके बारे में बताना है. मेड फेमस बाय द कॉपलेट, इस पॉइंट के थ्रू ये फेमस हुआ था. इफ देयर इज अ पैराडाइज ऑन अर्थ, इट इज़ हियर, इट इज़ हियर, इट इज़ हियर. वेयर इज लोकेटेड ऑन द लेक साइड इन द सिटी. कहाँ पे लोकेटेड है ये लेक साइड सिटी के? वी ऑल हैव टू आंसर. राइट द आंसर, श्रीनगर. Srinagar, SRINAGAR, Srinagar. The right answer is Srinagar. Now, fourth point, you can find Thiruvalluvar's statue and the Vivekanandan Rock Memorial in this South India town. ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे थिरुवल्लुवर स्टैचू और विवेकानंदन रॉक मेमोरियल मिलता है? साउथ इंडियन टाउन में. Which is that place? The name of that place is Kanyakumari. Write the answer, Kanyakumari. KANYA Kanyakumari. KUMARI Kumari. Okay, the right answer is Kanyakumari. Now fifth point, this hill station can be reached by a toy train. ये जो hill station है ये कहाँ से मिलता है? toy train, which hold a world record of being the train to cover the steepest slope in least डिस्टेंस. ये जो है ये कहाँ का माना जाता है? होल्ड्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड. वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड किया है इसमें, किस चीज़ में? ऑफ बीइंग द ट्रेन टू कवर द स्टीपेस्ट स्लोप इन लीस्ट डिस्टेंस. कम डिस्टेंस को कवर करने का. राइट द नेम. द राइट आंसर है शिमला. SHIMLA शिमला. राइट द आंसर. नाउ सिक्स्थ, द दासरा procession of this city completed 400 years in 2010. जो दासरा प्रोसेशन है इस सिटी का उसने 400 years completed किए. कब? 2010 में. राइट द करेक्ट आंसर. द राइट आंसर इज Mysore. राइट द आंसर Mysore. MYSORE Mysore. Next is seventh, this city of lakes in Rajasthan is known as the Venice of the East. ये जो सिटी है ये किस नाम से जानी जाती है? वेनिस ऑफ द स्टेट. राइट द आंसर. द आंसर ऑफ सेवेंथ क्वेश्चन इज उदयपुर. UDAIPUR उदयपुर. UDAIPUR उदयपुर. नाउ एट्थ point, the 0 mile marker is located in this city because it is preciously at the geographical center of India. ये जो है 0 माइल मार्कर वो लोकेटेड है ऐसी उस सिटी में जो कि जोग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया में मानी जाती है. कौन सी है? राइट द आंसर, नागपुर. द करेक्ट आंसर इज नागपुर. NAGPUR नागपुर. ओके, राइट द आंसर. नाउ सी बिलो, seek out. In the left hand side, in the box it is given seek out. The question is, where is the Valley of Flowers located and who discovered it? Valley of Flowers कहाँ लोकेटेड है और इसे किसने बनाया है, डिस्कवर किया है? चमोली उत्तराखंड. चमोली उत्तराखंड. राइट द आंसर, CHAMOLI चमोली उत्तराखंड. UTTRAKHAND उत्तराखंड. It was discovered in 1931 by all British mountaineers. इसे किसने डिस्कवर किया था? ब्रिटिश माउंटेनियर्स ने डिस्कवर किया था. ओके, नाउ
Change the page, open page number 12. Here are a few famous families of India. कुछ फेमस फैमिलीज इंडिया की गिवन है. कंप्लीट द लिस्ट बाय फिलिंग इन दी मिसिंग एंट्रीज. जो जो नेम्स मिसिंग है हमें उनकी एंट्रीज को फिल करना है. जैसे हमें फर्स्ट पिक्चर जो गिवन है वो किन की गिवन है? धीरूभाई अंबानी. द वाइफ ऑफ धीरूभाई अंबानी वॉज कोकिला बेन अंबानी. राइट द स्पेलिंग कोकिला, KOKILABEN, कोकिला बेन, BEN, अंबानी, AMBANI, अंबानी. Now see in the left hand side it was given Neeta Ambani. The missing one is Mukesh Ambani. Mukesh Ambani, write the spelling MUKESH, Mukesh Ambani, AMBANI, Ambani. Okay, now see the right hand side of the chart. It was the name was given Anil Ambani. The wife of Anil Ambani is Tina Ambani. Write the spelling TINA, Tina Ambani, AMBANI, Ambani. Okay, now second one is Sharmila Tagore. Sharmila Tagore is given. The name of the person who is missing is Mansoor Ali Khan Pataudi. Mansoor Ali Khan Pataudi. Write the spelling MANSOOR, Mansoor Ali, ALI Ali Khan, KHAN Khan Pataudi, PATAWDI, Pataudi. Now see in the left hand side of them Saif Ali Khan. The wife of Saif Ali Khan is Kareena Kapoor Khan. Write the spelling Kareena, KAREENA, Kareena Kapoor, KAPOR, Kapoor Khan, KHAN, Kapoor Khan. Now see in the right hand side the name is Kunal Khemu. Kunal Khemu name is given. The missing name was Sona Ali Khan. Write the name Sona Ali Khan, SONA, Sona Ali, ALI Ali Khan, KHAN Khan. Now see below the question is given in seek out. Seek out. Okay. Find out the profession of your great grandfather, grandfather and father. You all have to find the profession of your great grandfather, grandfather, great grandfather and father. Ask from your parents and write the profession of your great grandfather, grandfather and father in the question book. Okay, in the book you all have to write the answer of this by yourself. Okay students, this is all for today. Next we will do in the other class. Thank you students.